नमस्कार, मैं सीए मनमोहन जिंदल, IBBI registered valuator from Mumbai in security and financial assets. We shall discuss today on one of the valuation basis, maybe fair value. Valuation is not easy. When we have to go for valuation, we have to choose a basis in consultation with the client. The basis may be going concern, liquidation, fair value, fair market value, and so many others. So, we should discuss on the fair value. So, valuation analysis and report should be in conformity with the ICIC valuation standard issued by the Institute of Chartered Accountants of India. जो वैल्यूएशन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने इशू किए हैं 2018 में और आगे भी करेगी, उनके मुताबिक वैल्यूएशन को चलना पड़ता है. In addition to the general standards, guidelines of the valuation standards, report specifically complies with ICI valuation standard 102 valuation basis. So, वैल्यूएशन बेसिस का भी उतना ही ध्यान रखना है. ये वैल्यूएशन स्टैंडर्ड 102 में बताया गया है. वैल्यूएशन अप्रोचेस एंड मेथड्स को स्टैंडर्ड 103 में बताया गया है. स्कोप ऑफ वर्क एनालिसिस एंड एवेल्युएशन को स्टैंडर्ड 201 में, एंड रिपोर्टिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन को स्टैंडर्ड 202 में, एंड बिजनेस वैल्यूएशन को IBS 301 में. So we should take care of all the standards wherever applicable. So fair value, one of the valuation basis may be fair value for valuation conclusion. हम valuation conclusion के लिए fair value को भी एक basis मान सकते हैं. Fair value is defined by IBS 102 as the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the valuation. So these are 3-4 characteristics are there कि एक एसेट को बेचने से हमें क्या प्राइस मिल रहा है, या लाइबिलिटी का प्राइस देने में कहाँ खत्म हो रही है, हमें कितना देना पड़ रहा है, और ये एक ऑर्डरली ट्रांजैक्शन हो चाहिए, कंप्रोमाइज नहीं होनी चाहिए, पहले से तय नहीं होनी चाहिए, उसी समय मार्केट रनिंग कंडीशंस में होनी चाहिए बिटवीन द मार्केट पार्टिसिपेंट. मार्केट पार्टिसिपेंट्स एक आर्म्स लेंथ पर होते हैं, एक दूसरे के साथ कंसोलिडेट ना करते हुए, जान पहचान ना करते हुए, और उसने बेचना है, उसने लेना है, बिल्कुल फेयर डील होनी चाहिए, और एक वैल्यूएशन डेट को, एक समय, एक डेट को ये फेयर वैल्यू मानी होती है. IBS 102 defines orderly transaction as a transaction that assumes exposure to the market for a period before the valuation date to allow for marketing activities that are usual and customary for the transaction involving such assets and liabilities, and it is not a forced transaction. Willingness होनी चाहिए, force नहीं होना चाहिए, compromise नहीं होना चाहिए, that is called the orderly transaction. The length of exposure time will vary according to the type of asset and market conditions. मतलब एक आदमी ने करोड़ 2 करोड़ रुपए की इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदनी है तो उसके लिए टाइम ज्यादा लगेगा, और एक टॉफी लेनी है और बहुत सामान लेना है 100-125 रुपए का, तो वो इमीडिएट परचेज या सेल हो जाता है. IBS 102 further defines that market participants are willing buyers and willing sellers in the principal or most advantageous market for the asset or liability that have the all the following characteristics. तो इनकी ये क्या characteristics हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे. They are independent of each other. वो मार्केट पार्टिसिपेंट्स इंडिपेंडेंट होने चाहिए each other से. That is, they are not related parties as defined under applicable accounting framework and set of reporting accounting standards there.
Although the price in a related party transaction may be used as an input into a fair value measurement if the entity has evidence that the transaction was entered into the market terms or at the arm's length. They are knowledgeable भी होना चाहिए, have a reasonable understanding about the asset or liability and the transaction using the available information, including information that might be obtained through due care that is usual and customary. They are able to enter into a transaction for the asset or a liability. वो एक asset और liability उसका underwriting asset या underwriting liability होनी चाहिए. They are willing to enter into a transaction for the assets or liability, that is, they are motivated but not forced, otherwise compelled to do so. In the absence of real buyer or seller, the lack of stated intention by the holder to sell, an assumption must be implied in the determinant. ये सर्कमस्टांसिस हो सकते हैं कि भाई हमारे पास रियल बायर नहीं है, रियल सेलर नहीं है, परंतु हम उस एसेट की वैल्यू करना चाहते हैं, तो भी उसको देख करके रियल बायर और रियल सेलर ना होते हुए भी एक इंटेंशन जाहिर करके, एजम्पशन मान करके उसकी वैल्यू की जा सकती है. द कंपनी में बी वैल्यूड ऑन ए स्टैंड अलोन फेयर वैल्यू बेसिस, एज्यूमिंग दैट ए हाइपोथेटिकल बिलिंग बायर एंड ए हाइपोथेटिकल बिलिंग सेलर. एक कंपनी की वैल्यू को स्टैंड अलोन बेसिस पर भी किया जा सकता है, यह मानते हुए कि ये हमें बेचनी है, चाहे वो एक्चुअल में बिके या ना बिके. The fair value basis may be applied to produce a reasonable proxy for the value of the company as on the date of the valuation date. Valuation date is very, very important. This valuation to be performed on the premise that the company will continue to operate as a going concern. ये premise, ये assumption मान के चलनी पड़ेगी कि ये going concern है, दो near future में बंद होने वाली नहीं है, liquidation value नहीं आएगी. Going concern value called the value of a business enterprise that is expected to continue to operate in the future. So thank you very much. This is from my side, and it is only for the awareness purpose. I am trying for any suggestion. Kindly write me on my mail. Thank you.